Hello students, welcome to Krishnas Maths. So today we'll start with the fourth chapter, which is your matrices. Fourth chapter आज हम start करिए. Our lecture 1 and lecture 2 will be both fundamental basic concept वाला lecture रहियो. तापर जो lecture गुडा आसो सेथरे हम क्वेश्चन सॉल्व करियो. एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर आ इथरे इजी चैप्टर आल्सो. हां गोटे दिटा पार्ट आरो छाड़ देले गोटे दिटा हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ए वाला टेक्निक ता छाड़ देले पूरा चैप्टर इजी अछि. आ यार जेई रे कंपलसरी क्वेश्चन आसो ही आसो जेई. तो ये चैप्टर पर हमें प्रीवियस ईयर 2019 20 और 21 ई पॉसिबल 22 ए तीनटा तो कंपलसरी हमें करूछे. एटा मध्ये जदी हमहु क्वेश्चन अवेलेबल हैला तो हमें एटा भी तैयारी करबा. राइट. तो एति के हमें करबा. जदी चैनल रे मोर नुवा छै चैनल को लाइक जेंति सब बेले करछे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो व्हिच इज L and S square. So that everybody will get benefit from this. It is completely free अछि मोर प्रोग्राम मु जेई लेक्चर मध्ये करूछि. Not only 12th along with that with the 12th सहित आमे जेई लेक्चर मध्ये प्रिपेयर करिया so that जेतले हमर 12th रे एग्जाम सरीबो या 12th रे पोर्शन सरीबो will get sufficient time for preparation of जेई also. एबे खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिया सेतले आमे जेई रो गोटे क्रैश कोर्स तैयार करिया. ठीक अछि. चल अब लेट करिबे स्टार्ट करिबा हमर वीडियो. मैट्रिसेस बेसिक कांसेप्ट कोन, मैट्रिसेस डेफिनेशन कोन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कोन सेबडा आसो देखि. फर्स्ट वन मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर. व्हाट अ मैट्रिक्स इज एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स माने देखो गोटे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. किछ बंच ऑफ नंबर्स को हम जे रो और कॉलम रे अरेंज करबा ताको हम मैट्रिक्स कहबे. देखो 1 2 3 -2 1 7 एमती गोटे कहली दिस इज अ मैट्रिक्स. आज हमें 1 2 3 4 -7 and 6 दिस इज वन मोर मैट्रिक्स. ये सब गोटे गोटे मैट्रिक्स. तो एठी होची एटा हम कहउछे रो फर्स्ट रो, एटा हम कहउछे सेकंड रो रो 2, एटा हम कहउछे रो 1 रो 2 रो 3 है ना. नाउ एटा हेगला कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एठी हेगला कॉलम 1 और कॉलम 2. बुझियला. अब जब मु मैट्रिक्स एमती लिखि 1 2 -1 दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स. जब मैं एटा 1 2 1 एमती लिखि दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स. दिस ऑल आर मैट्रिसेस. आउ हमु बुक रे ये तो हमें m नंबर ऑफ रो एमती लिख परिबा है ना. 1 2 3 4 5 6 -1 एमती लिख चलले. याड मध्ये 2 -5 7 एमती भी लिख चलले है ना. तो m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स अपन लिख परिबे. m number of rows n number of columns. What is m into n? M into n is the order of the matrix. Order माने कौन होची? Order of the matrix माने number of rows multiplied by number of columns. Number of row और number of columns जब multiply करियो जहाँ मिलियो तमर हेगला सेटा order of the matrix. जदि मु order लिखबे देखो जो मु एग्जांपल बडा करली देखो फर्स्ट एलिमेंट ये जो मैट्रिक्स कथा मु कहछि एथरे दुईटी रो अछि आ तीनटी कॉलम अछि. तीनटी कॉलम तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. 2 into 3 को 6 कहबे. हां ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 और 2 by 3 इनते कहबे. माने फर्स्ट एलिमेंट जोटा हबो सेटा हो तमर रो इंडेक्स एंड सेकंड जो एलिमेंट हो सेटा तमर कॉलम इंडेक्स. एठी तीनटा रो आ दुईटा कॉलम. कितनी कॉलम अछि देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2. Row how many rows are there? 3 rows are and 2 columns are there. So order of the matrix will be 3 cross 2. 3 cross 2. Here only one row. केतरा रो अछि गोटे रो ही अछि तीनटा कॉलम अछि तो 1 cross 3. एठी तीनटा कॉलम अछि गोटे रो अछि तो 1. एठी तीनटा रो अछि 3 रो ना 1 2 3 3 rows and only one column. तो order of the matrix is 3 cross 1. ठीक अछि. आउ जदि मैट्रिक्स तो ऑर्डर रे 2 और 3 सेम हेगला 2 और 3 जदि सेम हेगला ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. These all are rectangular. Why rectangular? Because the number of rows are not equal to number of columns. So number of rows जदि equal हेलानी number of columns होते तो this is rectangular matrix. क्या कौन कहबे rectangular matrix. जदि equal हेगला equal हेगले कहबे square matrix. If number of rows not equal to number of columns then it is called a rectangular matrix.
otherwise it is a जब equal हेगला number of rows then this is called square matrix. Square matrix को गोटे एग्जांपल लिख दो. Square matrix ର एग्जांपल होची जदि मु लिखली 1 2 3 1 2 3 4 number of rows to number of columns तो square matrix हेगला. एमती जब 3 3 करियो मतलब square matrix हेगला. बुझियला what a matrix is? Matrix is a rectangular array of elements. If the number of rows are m and number of column is m, then the m by n. Then it is called a m by n matrix or matrix of order m cross n. Empty body. It's a m by n matrix or a matrix which is of order m by n, where m represents number of rows, n represents number of columns. ठीक है. आउ एठी हेगला तमरा m number of rows आउ एठी हेगला n number of columns. किंतु आमो बुक रे 3 row और 3 column पर्यंत रेस्ट्रिक्टेड अछि. आउ ऑर्डर माने कोन? ऑर्डर माने number of rows multiplied by number of columns. Rectangular matrix कोन? Number of rows not equal to number of columns. Square matrix कोन? Number of rows equal to number of columns. बुझियला सब बढ़िया आगे. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रो फर्स्ट वाला जीरो मैट्रिक्स. अब जीरो मैट्रिक्स कोन होता है? जीरो मैट्रिक्स माने या को हम डिनोट करछे जीरो. कोन डिनोट करबा? जीरो. हां जोठी सब एलिमेंट तार जीरो रहबो. कोन सब एलिमेंट जीरो. जदी एम्प्टी हला केते रो केते कॉलम? 2 रो आउ 2 कॉलम. तो एटा हेगला 2 by 2 जीरो मैट्रिक्स. या को हम रिप्रेजेंट करबा O2. जदी 3 by 3 जीरो मैट्रिक्स हला है ना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 all the elements are 0 and matrix is of order 3 cross 3. Matrix is of order 3 cross. So this is a square matrix. Square matrix. And since all the elements are 0, this is called a zero matrix. This is also a zero matrix. So zero matrix जदि 2 by 2 order रहला ताको हम रिप्रेजेंट करबा O2. 3 by 3 हेले O3. आउ कोन ऑर्डर हेले हम जीरो मैट्रिक्स तो कहबा रिप्रेजेंट करबा 0 रे किंतु m cross n order एम्प्टी हेगी. And zero matrix is also called null matrix. Zero matrix का आउ कोन कहउछे null matrix मध्ये तार ना होय जति सब जगह एलिमेंट मैट्रिक्स रो 0. ठीक अछि. चल नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. जदि मु गोटे मैट्रिक्स तुमको देली आ से मैट्रिक्स को ट्रांसपोज बाहर करिया को. देखो A is a matrix 1 2 3 2 -1 5. लेट ए हेगला तुमरो मैट्रिक्स. ए ट्रांसपोज माने कोन करियो रो आ कॉलम को इंटरचेंज कर दो. कोन कर दो रो आ कॉलम को इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज कला पर जोटा आसी माने रोटा जोटा आसी सेटा कॉलम हे जो. सो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड column. तो first row हेगला first column, second row हेगला second column. So this will be your A transpose. एटा कोन हेगला A ट्रा. आ A transpose को हम m से रिप्रेजेंट करते A power t और A dash और A dash. बुझियला जति गोटे मैट्रिक्स देखो एटी गोटे एग्जांपल तो बुक रे दिया है. एग्जांपल कोन रो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ताको जते ट्रांसपोज कर दो एम्प्टी आसो. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? मु जो एग्जांपल टा देली यार ऑर्डर 2 रो एंड 3 कॉलम. ट्रांसपोज कला माने कोन हेजो ऑर्डर उल्टा हेजो. 2 क्रॉस 3 विल बिकम 3 क्रॉस 2. ठीक है. दिस इज ट्रांसपोज माने गोटे गिवन मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम कोन करे इंटरचेंज कर दो. जोठी रो अछि सेटा कॉलम बना देबे सेकंड रो टा सेकंड कॉलम बना तर ऑर्डर मध्ये उल्टा है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज. अब जदि A तमर गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय A dash और A raised to t. एटा ट्रांसपोज कर. अब ऑब्वियस गोटे कथा अछि जदि ट्रांसपोज को कोन ट्रांसपोज करियो कोन आंसर आसो A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज will be always equal to A. A transpose रो ट्रांसपोज will be always equal to A. सेटा देखा छै. The transpose of the transpose of a matrix is the matrix itself. और की यार प्रॉपर्टी अच्छा मैं आगे जा गले देखिए. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स माने मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो. मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो जो एम्प्टी रहला इट्स अ रो मैट्रिक्स. ऑर्डर केता होबा यार 1 रो एंड 2 कॉलम. जदि एम्प्टी रहला 1 -1 3 only 1 row but 3 columns. जदि both are row matrices. Row matrices मतलब matrix with only one row. Number of columns केते भी पारे 2 भी पारे 3 भी पारे कुछ भी पारे किंतु number of rows will be always equal to 1.
कॉलम मैट्रिक्स माने नंबर ऑफ कॉलम गोटे हो, नंबर ऑफ कॉलम कौन हो गोटे हो, एंड नंबर ऑफ रोज यू कैन राइट एनीथिंग। तो देखो ये 2 क्रॉस 1 तो नंबर ऑफ कॉलम 1 हेगला, यार ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 1 हेगला, यार रो 1 तो ये रो मैट्रिक्स हेगला, रो 1 हेले रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 हेले कॉलम, बुझिगला। गोटे रो रहिबो, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी 2 or 3 or anything, that is रो मैट्रिक्स। गोटे कॉलम रहिबो, नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग, तो रो मैट्रिक्स, रो और कॉलम, बुझिगला। जेडी गोटे रो रहले रो मैट्रिक्स, गोटे कॉलम रहले कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग एंड कॉलम मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स माने these are always square matrix। डायगोनल मैट्रिक्स माने मैट्रिक्स इन व्हिच एटा सब वाले स्क्वायर मैट्रिक्स होला, मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट को छाड़ देले बाकी सब जीरो। भागो मु एंते लिखली 1 -2 3 remaining all are zero, बाकी सब एलिमेंट कौन हो जीरो। these are called diagonal। जदि मु 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखली, this is 5, this is 3, this is 0, this is 0, so these are diagonal matrices। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल जो एलिमेंट रहिबो सेगुडा का नॉन जीरो, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। देखो कौन देछि, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ व्हिच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो गोटा को डायगोनल रा नाही सेगुडा को जीरो, इट्स कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो द एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम, these are non zero, these are non zero, remaining all are zero। एटा हेगला डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ कम्स योर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कोन हो, डायगोनल रो जो एलिमेंट रहिबो तारा वैल्यू इक्वल हो, ऑल आर इक्वल वैल्यू, जैसे 2 2 2 रिमेनिंग ऑल हैज टू बी जीरो। डायगोनल रो कोन होतला, नॉन जीरो होतला, किंतु सब इक्वल नहीं होता। जदि इक्वल हेगला तो स्क्वायर मैट्रिक्स हेगला। जदि के कहबो सर -4 0 0 और -4 इज इट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यस दिस इज अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज़ डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल ऑफ इक्वल वैल्यू। जदि मैं एमती लिखली -2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 -2, these are all scalar matrices। तो ये हेगला स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रिमेनिंग आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल and remaining zero, remaining zero, diagonal equal is remaining element zero है, हेले स्केलर मैट्रिक्स। बुझिगला, डायगोनल माने डायगोनल को छाड़ी की बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, एंड स्केलर मैट्रिक्स माने डायगोनल एलिमेंट गोटा नॉन जीरो होतला सेठी डायगोनल रे एठी सब इक्वल है। देन कम्स योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोन हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रो डेफिनेशन होचे एटा, गोटे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो व्हेन a into a ट्रांसपोज, a को a ट्रांसपोज जतला मल्टीप्लाई करियो आंसर आसीयो i। i माने हमें पढिबा पर देखो आ गोटे देखियो डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स पर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने एम्प्टी मैट्रिक्स जार डायगोनल एलिमेंट 1 रिमेनिंग ऑल आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रिमेनिंग ऑल आर जीरो, कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 1 रिमेनिंग ऑल आर जीरो, रिमेनिंग ऑल आर जीरो, डायगोनल 1 हेगला, रिमेनिंग सब जीरो हेगला, तो याको हम कहबा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय i, कैपिटल I से रिप्रेजेंट करी। आ यार एठी अछि 3 रो आ 3टा कॉलम, so this will be i3 and this is 2 row 2 column, so this has to be i2। i2 माने मैट्रिक्स जोथरे दुईटा रो दुईटा कॉलम रहे, i3 माने मैट्रिक्स जोथरे 3टा रो 3टा कॉलम रहे। ठीक अछि ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स माने a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i। हां, a into a को a ट्रांसपोज रे मल्टीप्लाई करो या a ट्रांसपोज को a रे मल्टीप्लाई करो, आंसर कोन आसबार अछि i आसबार अछि। आ मल्टीप्लिकेशन केमति करियो हम पर देखबा।
जो algebra of matrices आयो there will see how to multiply एठी खाली मन रखो when you multiply a with a transpose गोटे मैट्रिक्स को तार ट्रांसपोज रे मल्टीप्लाई कलो जब तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आसला यूनिट मैट्रिक्स आसला जोटी डायगोनल एलिमेंट गुडा 1 हो और रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो दोस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन कम्स योर idempotent matrix माने a into a a square will be equal to a square माने कोन हो a into a यदि a square equal to a हला then the matrix is called an idempotent matrix a square equal to a a को a रे मल्टीप्लाई करो पुणी जदि a आसला then that is called idempotent matrix then comes your a term गुडा खाली मन रखो in idempotent a square is a orthogonal a into a transpose equal to I involuntary is a square is equal to I देखो idempotent रे कोन थिला a square equal to a थिला एठी a square equal to I a गोटे मैट्रिक्स जाको पुणी मल्टीप्लाई कर दो सही मैट्रिक्स होतो हां तो विल गेट a square if a square is equal to I a square equal I then involuntary nilpotent मतलब जदि a raised to n equal to 0 हला a raised माने a square जदि 0 हला तो nilpotent of order 2 a cube 0 हले nilpotent of order 3 a raised to m 0 हले nilpotent of order m a raised to n 0 हले nilpotent of order n a raised to 4 0 हले nilpotent of order 4 तो कौन कौन देखले प्रथम देखले ऑर्थोगोनल a into a transpose equal to I idempotent देखले a square is equal to a involuntary देखले a square is equal to I and nilpotent देखले a raised to n equal to 0 बुझिया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यार टिके भलो डिस्कशन करिया हां देखो गोटे मैट्रिक्स से सिमेट्रिक हम गोटे मैट्रिक्स कोन हो सिमेट्रिक जदि a गोटे मैट्रिक्स हेगला a इक्वल टू aij a इक्वल टू aij जदि मु नेली 3 क्रॉस 3 कोन नेली मु 3 क्रॉस 3 ठीक अछि आ यार एलिमेंट्स कोडा केमति लिखवा 3 क्रॉस 3 हले a11 i1 j1 a12 i1 j2 i1 3 तीनटा कॉलम अछि देन सेकंड रो लेखो सेकंड रो फर्स्ट वन सेकंड रो सेकंड सेकंड रो थर्ड थर्ड रो फर्स्ट थर्ड रो सेकंड थर्ड रो थर्ड है ना जदि aij इक्वल टू aji हला कोन कोन हला aj इक्वल टू aij ij इक्वल टू ji माने जदि मु i को 1 लिखली j को 2 लिखली a 2 1 हो जदि 2 लिखली 3 लिखली एठी उल्टा हे जो 3 2 हो जदि मु एठी 1 लिखली 3 लिखली एठी कोन हो 3 हे जो 1 हो माने a13 रो वैल्यू a31 सहित इक्वल ए दुटा वैल्यू इक्वल हो a32 should be equal to a23 and a12 must be equal to a21 एई जोड़ी एई तीनटा वैल्यू जदि इक्वल हो तो मैट्रिक्स टा हम कोन करना सिमेट्रिक मैट्रिक्स हां गोटे एग्जांपल लिखी एग्जांपल कोन देखो एग्जांपल मु एटा लिखछि the diagonal element कथा हमें कुछ कहून so let be diagonals are non zero मन रखो symmetric matrix रे diagonals are non zero and remaining element देखो जदि एठी मु 4 लिखुछि ये 1 2 रो एलिमेंट ये 2 1 रो एलिमेंट दुटा जा 4 ए दुटा इक्वल देखो मु कहछि 1 2 ij equal to ji एटा इक्वल है आ गोटा लिखुछि जदि 2 3 लिखि 1 3 लिखि दोस्तों एटा सपोज 1 3 5 सो ये भी 5 होगा करेक्ट ना आ गोटे लिखबी जदि एटा अराउंड 3 हे गला सो एटा भी 3 हो बुझला देखो प्रथम कथा होची डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल नॉन जीरो डायगोनल को नॉन जीरो कर देले ए दुईटा इक्वल एंड दिस टू आर आल्सो इक्वल एमती जदि हला याकू सिमेट्रिक काउन को याकू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे मन रखो a equal to a transpose for a symmetric matrix a must be equal to a transpose a और a transpose दुटा जाके इक्वल हो तो प्रथम कंडीशन कोन aij equal to aj एट तमर बुक रे लिखाई देखो aij equal to aj देखा look this is aij equal to aj and this must be square matrix एटा सब बोले square matrix सब को नथले डिफाइन कर परिबा आउ फर्स्ट डेफिनेशन a matrix is said to be symmetric if the transpose is equal to itself transpose ता से मैट्रिक्स होते इक्वल माने a equal to a transpose जोटा हम राइट साइड लिखछ जदि a equal to a transpose एट लिखछ a equal to a transpose मैट्रिक्स होला सिमेट्रिक हम एमती केमती मन रखिया डायगोनल एलिमेंट को छाड़ दियो
ता ऊपर तळ एलिमेंट गुडाक वैल्यू सेम रो तो को एलिमेंट वैल्यू सेम रो a12 और 21 23 और 31 31 और 1 ऑपोजिट एलिमेंट हां डायगोनल रो ऑपोजिट एलिमेंट हां डायगोनल रो ऊपर जोटा रो डायगोनल तळे भी सेटा रो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन कम्स टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो गोटे एग्जांपल देखिबा तो मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric aij skew symmetric aij of order m cross n or n cross square matrix m into n this is equal to is skew symmetric is skew symmetric if skew symmetric केतेबेले हो A is equal to minus A transpose remember A equal to minus A transpose आउ जदि मैट्रिक्स टा हमर A फॉर्म रे रहला aij m cross m then if aij equal to minus abi first condition all diagonal elements are zero all diagonal elements are zero so this is the first one this is the second one जेतिके डायगोनल एलिमेंट अछि सबरो वैल्यू 0 हो सबरो वैल्यू का हो 0 आउ डायगोनल ऊपर तळ वैल्यू i j इक्वल टू कोन हो माइनस ji सिमेट्रिक रे कोन हेतला इक्वल टू हेतला एठी माइनस हो माने प्रथम हम कोन करबा डायगोनल एलिमेंट को लिख दबा let us try diagonal element so that has to be 0 diagonal element सब कोन हेगला 0 आ ऊपर तळ वैल्यू जदी लिखिबा तार वैल्यू इक्वल हो जदी एठी 2 हला एठी -2 हो सिमेट्रिक रे कोन जुटे जग इक्वल होतला एठी इक्वल तो हो वैल्यू इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज बट साइन डिफरेंट हो एठी जदी मु 4 लिखली एठी हो -4 एठी मु 6 लिखले एठी हो -6 तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल आउ तो रिमेनिंग एलिमेंट जो इक्वल हो बाय मैग्नीट्यूड और बाय वैल्यू एंड ऑपोजिट विल बी इन द साइन तो प्रथम कथा कोन कहली मु प्रथम कथा कहली कि गोटे मैट्रिक्स को जदी आमे कहउछे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रथम कंडीशन होची A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो जोटा मु एठी कहली तुमको दैट इज द फर्स्ट केस aij इक्वल टू माइनस aj हो जो एलिमेंट गुडा डायगोनल ऊपर तळ रहबे सेही गुडा करो एलिमेंट रो वैल्यू सेम रहबे किंतु साइन ऑपोजिट हो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0 एठी मु कहउछी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रे डायगोनल्स आर ऑलवेज 0 एटा हला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है आमे सब टाइप रो मैट्रिक्स ऑलमोस्ट कर दे ठीक अछि नेक्स्ट वन इज upper and lower triangular matrix upper and lower triangular matrix देखो a matrix is upper triangular a matrix is upper triangular if its elements below the diagonal are 0 below the diagonal are 0 and lower triangular if the elements above the diagonal are 0 डायगोनल रो ऊपर एलिमेंट 0 हेले अपर ट्रायंगुलर तळे एलिमेंट 0 हेले लोअर ट्रायंगुलर जेमति देखो एटा गोटे मैट्रिक्स यार देखो डायगोनल एलिमेंट हम डायगोनल भाबो 1 -2 3 1 -2 लेट दो जा डायगोनल एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर सेतेले हबो जेतेले डायगोनल रो तळर एलिमेंट सब कोन हिजो 0 हिजो डायगोनल तळर एलिमेंट कोन हेगला 0 हेगला अब डायगोनल ऊपर जो एलिमेंट रहबो सेटा किस तो वैल्यू रहबो भाबो 3 4 एंड 5 एको
सर व्हाई दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर माने जो नॉन जीरो एलिमेंट अछि नै कि से नॉन जीरो एलिमेंट को नै कि जदि आपण ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिवे ट्रायंगल लाइज इन अपर पार्ट जो जीरो एलिमेंट अछि ताको छाड़ दियो जो नॉन जीरो एलिमेंट ताको नै कि जदि ट्रायंगल बने ट्रायंगल रे अपर पार्ट रे हेंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हेंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गुड एग्जांपल लिखियो एग्जांपल कोन अछि फॉर लोअर ट्रायंगल जदि एटा गुड मैट्रिक्स अछि डायगोनल एलिमेंट हम कोन गुड लिखि देले कोन लिखियो डायगोनल एलिमेंट रे लेख कोन गुड 1 -2 3 जोटा हम आगे लिखते डायगोनल जदि ऊपर एलिमेंट 0 है इफ द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0 तळे कोन होबो तळे नॉन जीरो एलिमेंट्स तळे कोन होइजो नॉन जीरो एलिमेंट -1 5 and 7 नॉन जीरो एलिमेंट्स now this is called lower triangular why because if you take the elements which are non zero जो एलिमेंट गुडा को नॉन जीरो अछि तांको नै कि जदि ट्रायंगल बनेओ the triangle will lie in the lower part of the matrix so called lower triangular matrix upper triangular माने diagonal रो तळे एलिमेंट 0 lower triangular माने diagonal रो ऊपर रो एलिमेंट 0 so these are about types of matrix हम कोन पढले मैट्रिक्स कोन तार डेफिनेशन कोन रो मैट्रिक्स कोन कॉलम मैट्रिक्स कोन डायगोनल मैट्रिक्स कोन स्क्वायर मैट्रिक्स कोन स्केलर मैट्रिक्स कोन सिमेट्रिक कोन स्क्यू सिमेट्रिक कोन यूनिट मैट्रिक्स कोन जीरो मैट्रिक्स कोन and upper triangular कोन lower triangular कोन orthogonal कोन involuntary कोन orthogonal पढले involuntary पढले nilpotent पढले these are all called types of matrices next time देखियो operations of matrices गोटे मैट्रिक्स जो दिया है जे हम कोन ऑपरेशन करता है what are the operations we can perform with matrices that we will do in the next lecture okay अब जदि चैनल रो नुआ थे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे so that it will reach all the audience अब हम मिस नेक्स्ट लेक्चर है operations with matrices until then bye bye